Welcome to MPS Motivators, a unique online teaching and learning platform. This is Janendra Kumar standing in front of you. Before starting my this session, I would like to wish you all a very gracious good morning. So good morning friends. After the completion of the chapter direct and indirect speech, I am going to start a new chapter, and this is the first class of that chapter. The name of the chapter is the clause and complex sentences. Friends, the name of the chapter is the clause and the complex sentences. First of all, we have to understand and we have to study by going in the depth about the clause. Friends, I have defined the term clause. A clause is a group of words which forms a part of a sentence and contains a subject and a finite verb. अर्थात क्लॉज वाक्य नहीं होता है, बल्कि क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है और यह वाक्य का एक हिस्सा बनता है और जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है. But it is not a sentence, it is a part of a long sentence. यह एक लंबे सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसके पास सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर, आई नो व्हाट यू आर डूइंग. मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं. तो हम लोग देखते हैं कि वाक्य का दो पार्ट है. एक है आई नो, दूसरा है व्हाट यू आर डूइंग. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. द फर्स्ट पार्ट इज आई नो एंड द अदर पार्ट इज व्हाट यू आर डूइंग. फ्रेंड्स, आई नो is a complete sentence also. We can say I know, and it does not depend on any other part of the sentence for its meaning. So friends, this is a clause and the other part of the sentence, what you are doing, is also a clause. Why I know is not a sentence in this? Because I know contains a subject and a finite verb, but it is not a free sentence. It is not a free group of words, but it is joined with what you are doing. And so either I know or what you are doing is a clause, and neither I know nor what you are doing is a sentence. इस दोनों में से प्रत्येक एक क्लॉज है. आई मीन इस लंबे से सेंटेंस का जो दोनों पार्ट्स है वो दोनों पार्ट्स ही क्लॉज है. दोनों पार्ट्स में सब्जेक्ट है और दोनों पार्ट्स में फाइनाइट वर्ब है. इसलिए दोनों ही पार्ट्स क्लॉज हैं. इतना तो क्लियर हो गया होगा. आई थिंक दिस मच मस्ट हैव बीन क्लियर व्हाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आई नो एंड व्हाट यू आर डूइंग आर क्लॉजेज. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्लॉजेज कितने प्रकार के होते हैं. Friends, now I am going to discuss with you about types of clauses. क्लॉजेज के प्रकार के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. There are two types of clauses. दो प्रकार के क्लॉज होते हैं. फर्दर हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे उन दो प्रकार के क्लॉजेज के बारे में. We will talk about the two types of clauses first. Friends, there are two types of clauses. Principal clause, which is also known as
independent clause, and the second type of clause is subordinate clause, which is also known as dependent clause. अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, और क्लॉज का मतलब उपवाक्य, यानी स्वतंत्र उपवाक्य। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, अर्थात निर्भर उपवाक्य। डिपेंडेंट मीन्स निर्भर, एंड सो डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स निर्भर उपवाक्य। It is clear with the meaning of the clauses what may be the definition of the principal clause or the independent clause, and what may be the definition of the subordinate clause or dependent clause, but I would like to explain it. So take its a screenshot. Friends, as the definition of principal clause I have written on the board. The principal clause is a clause which does not depend on any other clause used in a sentence for its meaning. मतलब वाक्य में प्रयुक्त किसी भी दूसरे क्लॉज पर जो क्लॉज निर्भर ना करे अपने अर्थ के पूर्णता के लिए, अपने अर्थ के लिए जो क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर ना करे उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज टुगेदर। एज द डेफिनेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज which depends on the principal clause to exist in a sentence and for the completion of its meaning. अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज एक क्लॉज होता है जो वाक्य में अस्तित्व रखने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ अर्थ की पूर्णता के लिए वह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। विदाउट अ प्रिंसिपल क्लॉज इन अ सेंटेंस नो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी यूज्ड। So there is requirement of a principal clause for the existence of a subordinate clause in a sentence. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अस्तित्व के लिए, वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज के अस्तित्व के लिए वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज का होना अनिवार्य है। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स, एज एन एग्जाम्पल, I have just taken the same example that I took earlier, but at that time I did not discuss with you which part of the sentence is a principal clause and which part of the sentence is a subordinate clause. But now, as I have discussed with you what is a principal clause and what is a subordinate clause, so it has become easy for me and easy for you to understand it. See here, I know does not depend on what you are doing. I know can be used as a free sentence also, as a sentence also. I know. If anybody asks you, do you know about this? You say, yes, I know. हाँ, मैं जानता हूं। तो आई नो का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के रूप में किया जा सकता है, बट व्हाट यू आर डूइंग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट अ सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग इज अ सेंटेंस। आप क्या कर रहे हैं वाक्य है। What are you doing is a sentence, but what you are doing is not a sentence. So for the existence of this part of the sentence, what you are doing, there is requirement of the principal clause I know in this sentence. So
I know is a principal clause. Okay friends, I know is a principal clause and what you are doing is a subordinate clause. क्योंकि I know का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के रूप में हो सकता है और होता है, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के रूप में नहीं होता है, बल्कि व्हाट आर यू डूइंग का प्रयोग होता है वाक्य के रूप में. सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस I know is a principal clause and the part of the sentence what you are doing is a subordinate clause. And with this and with the explanation of the principal clause and the subordinate clause along with one example, I am ending this session and I am meeting you after a small break in the next session with the same enthusiasm and interest in teaching. I will try to increase my level of enthusiasm and interest in teaching, but I need your support. So friends, I request you to like, comment and share my video to others if you like it, and also download MPS Motivators by going to Play Store. Thank you. Have a nice day.